Good afternoon, dear student. How are you all? You all are fine? I hope you all are fine and healthy at home. And also hope you all are doing very well at home. So dear student, I Joy Singh, your maths teacher, and I welcome you all in a maths online class. So take out your maths book, student. Systematic mathematics. Okay, now check out page number 78. Okay, page 78. Now in this page today we are going to discuss about the subtraction of 3-digit numbers. Borrowing. ओके हम लोग 3-digit नंबर सब्ट्रैक्शन एडिशन अभी हम लोगों ने पढ़ा. इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडिशन तक पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-digit नंबर बोरोइंग और बोरो करके. ओके स्टूडेंट, नाउ सी ऑन पेज 78. ओके, पेज 78 is subtract. Okay, now see, subtract 389 from 868. Okay, subtract 389 from 868. Okay student, 868. सो आपको क्या करना है, आप जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसे आप अबव ऊपर लिखेंगे एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट यू हैव टू राइट डाउन एट द डाउन. ओके, नाउ सी हियर आई एम राइटिंग 868 minus 389. Okay, this is given. So now see here, we cannot subtract 8 from means 9 from 8. हम लोग 9 को 8 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 8 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड 9 इज द लार्जर नंबर. ठीक है, ये इससे ग्रेटेस्ट है. तो हम क्या करेंगे, वी टेक वन बोरो. वी हम लोग एक बोरो लेंगे इससे. ठीक है, अगर हम इससे बोरो करते हैं तो 8 जो है वो क्या हो जाएगा, 18. 8 क्या बन जाएगा आपका 18 और 6 जो है, अगर 6 अगर इसको दिया 1 दिया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5. ओके, Now see 18 minus 9. अब आप 18 को 9 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर होगा 18 minus 9 comes 9. Okay, 18 minus 9 comes 9. Now see 5. Now here comes 5. अब 5 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? No. So again we borrow 1 10 from 8. तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 और ये 8 हो जाएगा आपका 7. सो 15 minus 8. ओके, 15 minus 8 comes 7 and 7 minus 3 comes 4. Okay, this is the answer 479. Or like this only you have to do the subtraction here. Okay, it is given on page 78. Now on page 79, on page number 79
subtract. First you do this all question in your book. After that you do 10 questions in your notebook. Okay, see here, worksheet is given just like worksheet. This is okay, ये इस टाइप से दिया है. तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसको बुक में करनी है and after that you have to do in your notebook. Okay, so I am explaining. See, one question is already done. Now I am writing from the next. 6, 8, 3 minus 3, 9, 2. Okay, 6, 0, 6 minus 4, 3, 4. 8, 2, 7 minus 5, 3, 8. Okay, now 6, 1, 4 minus 2, 8, 6, 3, 7, 8 minus 2, 9, 4, 7, 8, 6 minus 3, 6, 9. These are the questions which are given in your book on page number 79. So, I am solving from here. Now see, from 3 and 2, आप 2 को 3 से subtract कर सकते हैं. Yes. So 3 minus 2 comes 1. So 1 I have written here. Now see, 8 minus 9. ये नहीं हो सकता. तो we borrow 1 from here and it will become 18 and this will become 5. Now 18 minus 9 comes 9 and 5 minus 3 comes 2. Okay, easy. Now see here, 4 minus 6, no. So we do borrow. हम लोग क्या करेंगे, borrow करेंगे. So 14 minus, it will become 14 और यहाँ क्या हो जाएगा 0. Okay, now 14 minus 6 comes क्या 8 and 0 minus 8 नहीं. So we do borrow from here and it will become 10. So 10 minus 8 is 2 and 6 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 5. So 5 minus 2 is 3. Are you understanding? कैसे कर रही हूं मैं? Okay. Now see, 6 minus 4. Yes, 6 में से 4 minus हो सकता है. So 2. 6 minus 4 comes 2. Okay. Now 0 minus 3. ये नहीं हो सकता. So we borrow 1 from 6 and it will become 10. और ये 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा 5. Okay. Now 10 minus 3. 10 minus 3 comes 7. Okay. 10 minus 3. So क्या आएगा 7. Now 5 minus 4. 5 minus 4. How much? 1. So 1. Okay student. Now see. 8 minus 4. Yes, 8 में से 4 को आप subtract कर सकते हैं. You can. So 8 minus 4 is 4. 7 minus 9. No, we cannot subtract 9 from 7. Okay, so we borrow 1 from 3. So it will become 17 and here 3 will become 2. So 17 minus 9 comes how much? 8. 17 minus 9 is 8 and 2 minus 2 comes what? 0. Okay, 2 minus 2 is 0. Now again here 7 minus 8. We cannot subtract 8 from the 7. So we again borrow 1 from 2 and it will become 17. ये 17 हो जाएगा
ओके नाउ 17 माइनस 8, अगर मैं 17 को 8 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर विल कम 9. ओके नाउ हियर इट विल कम 1. नाउ 1 सब्ट्रैक्ट 1 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो. सो आप 1 माइनस 3 नहीं कर सकते, तो 1 बोरो किया तो ये 11 हो गया एंड हियर इट बिकम 7. 11 minus 3, 11 minus 3, it comes 8, and 7 minus 5 comes 2. Okay, 289 answer. Now see the next question. Now 6 minus 9, no, we cannot subtract 9 from 6. So again what we will do? We will take 110 from here. हम 110 लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 7. ओके यहाँ पे 7 होगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16. Now 16 minus 9 is how much? Come 7. Now 7 minus 6 is 1 and 7 minus 3 comes 4. Okay, means 470. So these all are about the subtraction of 3-digit number borrowing. Okay, हम लोग borrow करके इसको subtract कर रहे हैं. So these all are about the borrowing. So please student, this question, this 6 questions you have to note down in your notebook, and rest questions you do it in your maths book. Okay, so do it. I am giving you the time. So hope student you are not having any problem in this. So do it fast student. Please student at home, please do the practice of the subtraction and addition of 3-digit number. जब आप घर पे practice करोगे then only you will understand. Okay, आप खुद से इसको करने की कोशिश करिए and practice, please practice at home. So do it fast student.
Okay, so up to 6 questions I have solved and rest questions you will solve in your own. Okay, आप खुद से अपना question करिए and in your book and as well in your copy also. So till then, keep learning, do practice at home and work hard. So take care, bye, stay home, stay safe.